मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और सीएट के जो नतीजे आए हैं वो आपके स्क्रीन पर हम एक बार फ्लैश कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन लगभग 3.5% आया है 10.3% के मुकाबले। रेवेन्यू 26% अप है, ऑलमोस्ट 4157 के पास ये नंबर आया है। पैट भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 60.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और क्लियरली चेन्नई प्लांट फॉर कैपेसिटी एडिशंस को लेकर एक अनाउंसमेंट हुई है जिस पर नजर रहेगी 1314 करोड़ के आसपास। और साथ ही ओएम और इंटरनेशनल मार्केट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी दर्ज हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है घरेलू बाजार के सेंटिमेंट को काफी हद तक एक पॉजिटिविटी इसके बदौलत आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा और हम मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ कुमार सुब्बैया जो है वो जुड़ चुके हैं। जानेंगे इनसे डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल मार्केट के वॉल्यूम्स और अन्य ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है। सर स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, आप समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नतीजों के हर पहलू पर आपके साथ बातचीत होगी। वॉल्यूम ग्रोथ शेप अप कैसे हो रही है अक्रॉस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, इस पर बातचीत करना चाहेंगे। क्या क्या सेगमेंट्स आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? थैंक यू, शुक्रिया आपका चैनल को इनवाइट करने के लिए। हम ए वेरी सेटिस्फाइंग क्वार्टर, टॉप लाइन भी 20% प्लस ग्रोथ था ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस इवन 26%. Margins improved, and overall happy with the cash position also in terms of the cash that the business generated. A quarter में पूरा all three segments, तीनों segment में growth बहुत बढ़िया था. Replacement का growth about 14% plus, and both international business and OEM business grew in excess of 20%. So overall, all three segments grew strongly in the quarter, and both year on year as well as on quarter. So, and similarly on the category side, okay, most of the categories, our own focus categories, two-wheelers, passenger car, and commercial categories like truck, all of them witnessed a strong growth in quarter three. And a drop in GST rates effective end of September would have played a role, particularly in achieving a strong growth in the replacement market. OEM का sales भी थोड़ा बड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल का सेल्स इसलिए हुआ था, उनका जीएसटी रेट भी कम हुआ. पैसेंजर कार, लो एंड कार्स आल्सो जीएसटी रेट वुड हैव हेल्प्ड इन टर्म्स ऑफ OEMs गेटिंग द ग्रोथ. इनडायरेक्टली हमारा टायर्स OEMs यूज करते हैं, इसलिए हमारा ग्रोथ भी ज्यादा था OEM के साथ. सो पूरा वेरी सेटिस्फाइड with the quarter three performance on all three parameters: cash, margins, and top line. यहाँ पर आपने क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज की बात की है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो होती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बता सके कौन कौन से रीजन्स और कौन कौन से सेगमेंट स्पेसिफिकली ट्रैक्शन के लिहाज से आप फोकस कर रहे हैं? No, see, passenger car tires is a very important focus category, and there has been some strong order wins in the replacement market in Europe region. So, and that is likely to sustain. So, second is that on the farm radial tires also, largely for Europe, the growth has been strong in excess of 20% over the same periods. In other geographies also, Middle East, Southeast Asia also, growth was good. Only geography where we had problem was in the US. Our dependence on US market is less than 5%, इसलिए impact ज़्यादा नहीं था एक क्वार्टर में, लेकिन पूरा और तीनों geographies में हम फोकस कर रहे हैं. फोकस कैटेगरीज पैसेंजर कार टायर्स as well as specialty tires. These are the two focus categories, and both of them delivered some good growth in quarter three. And order pipeline is also strong, so we expect international business का growth likely to sustain in quarter four also. राइट. डिमांड सेंटिमेंट कैसा है सर डोमेस्टिक मार्केट में? और सेमी अर्बन की अगर हम बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, किस तरह से आपको लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY26 अब मूव होता हुआ दिखाई देगा इन रीजन्स में? नो, सेंटिमेंट अभी तो बहुत पॉजिटिव हुआ है क्वार्टर थ्री में. कारण जीएसटी ड्रॉप, very important reason for that positive momentum to
kick in from October month onwards. So abhi generally March, February, March month are strong month. January thoda weak hai. Demand is generally weak in the month of January. So therefore, abhi momentum is strong both from OEM standpoint as well as from replacement. Replacement both from rural as well as urban side, the current momentum is strong. So therefore, we expect this to sustain in quarter four. The drop in GST rate was also significant. पहले ये 28% था, अभी सितंबर से वो 18% हुआ है. फार्म टायर्स में 18% पहले था जीएसटी, अभी 5% हुआ है. So that is also one of the reasons for the momentum and the shift in terms of sudden spurt in demand. ऑलराइट, चलिए रॉ मटेरियल्स पर एक बातचीत कर लेते हैं सर. रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर कितने स्टेबल रहे हैं सो फार? स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई कॉस्ट प्रेशर आप देख रहे हैं आगे दिखाई देगा? कोई प्राइस हाइक जिसके लिए ज़रूरत हो? नो, क्वार्टर थ्री में रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबल था. टायर इंडस्ट्री के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल रबर वेरी इंपॉर्टेंट है. Crude oil prices remained stable and also crude oil derivatives also. Crude is still hovering around $60 to $65. So that gave stability. Natural rubber prices were largely stable except in the last 4 weeks or so. The international prices have moved up from $1,700 to $1,800. Indian rupee has depreciated against the dollar from 86, 87 level in the beginning of the previous quarter to about 90. As we speak, आज रुपी ब्रीच 91 ऑल्सो. सो इसके कारण क्वार्टर फोर में थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट 1.5% क्वार्टर थ्री के ऊपर जा सकता है. वो स्मॉल कंसर्न एज फार एज क्वार्टर फोर इज कंसर्न. अदरवाइज थिंग्स लुक स्टेबल. चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. नतीजों पर आपने जुड़े हमारे साथ और विस्तार से बातचीत की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.